That's all. That's all. It's not to be discussed here and decided. What is it? Kapil Sibal, what is your point of order? I just want to point out, sir, आज पहली बार अबे आज पहली बार आपके द्वारा मतलब देश ठीक है. You are asking a point of order first time. I agree. The point of order is, sir, that today we have discovered why this government took a decision on demonetization. It had. सुनो तो सही, sir. No. Sir, Under what rule, sir? Just hear me. Let him come with a substantive. Just hear me. No. Just hear me. He is asking Sir, under sir, what what rule? happened is Under I what am- rule? Honourable Minister is asking under what rule? Let him explain that. Sir, No. sir, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2 किस्म के नोट छपती है. So what? छपाती है. डिफरेंट साइज के. So what? डिफरेंट साइज के. डिफरेंट डिजाइन के. How can we take out on like फीचर्स that? के. Sir, how it is the point of order? Yeah, that is the correct point. दोनों नोट. How it can be the point of order? दोनों नोट. You have to quote the rule. This is a misuse दोनों of point नोट of मैंने order. सदन के पटल पे रखे हैं. Now, Kapil Sibal ji. Bring a substantive motion. ऑथेंटिकेट किया है मैंने. अच्छा ठीक है ऑथेंटिकेट किया है. सदन के पटल पे रखे हैं. और दोनों नोट के साइज डिफरेंट है. देखिए आरबीआई. और आज हमें पता चला है. Sir, we That's have a different issue. आज पता चला It is not a point of order. That is not a point of order. Yes. That is a different issue. It should not be allowed. जो नोट भाजपा के कार्यकर्ता के पास इलेक्शन के not a दौरान point of हैं, order. वो यही नोट हैं जो आरबीआई छापती है. That is not a point of order. An issue for a not an issue for a point of order. There are two types of notes. How can it even if there are two types of notes, how can it be a question of point of order? How is it point of order? No. What is it? My only question is, even if there are two types of notes, how can it be a point of order? That is not what I was saying. और आप जानते हैं कि ये सीरियस नहीं है, ये सबसे सीरियस इशू है. ये इस सेंचुरी का सबसे बड़ा स्कैम है. ये इस सेंचुरी का सबसे बड़ा स्कैम है कि गवर्नमेंट ही 2 किस्म के नोट छापती है. सरकार में क्या Not a point. I have not understood. This is not a point of order issue. आप देश के साथ धोखा कर रहे हो. इसीलिए हम समझते थे कि यहाँ कम से 1000 करोड़ रुपए आता है आपको इलेक्शन लड़ाने के लिए, करने के लिए. आपकी पार्टी क्या 2 करके रही है, किस्म के देश नोट जानता छापते है. हो. हाँ, आप 2 किस्म के नोट छापते हो. आपकी पार्टी अरे सेवा आपको करी है, मालूम नहीं राष्ट्रों होगा. को बचाती रही है. आपके मालूम नहीं होगा 2 किस्म के और आज देश ईमानदार कर रहा है. बिल्कुल. हमने हुकूमत की, हमने 2 किस्म के नोट नहीं छापे, एक पार्टी के लिए और सरकार के लिए. Now please. अब मालूम हो गया, अब मालूम हो गया please. पैरेलल इकोनॉमी क्या चलती है. ये पैरेलल इकोनॉमी चलती है. LOP please. 2 किस्म के 1000 के नोट, 2 किस्म के 500 के नेट. एक पार्टी चलाए और एक सरकार चलाए. पार्टी में भी आपके लिए No please. I am not allowing. I am not allowing. No please. It's not a point of order issue. Why? So what? Then how can it be a point of order? भ्रष्ट लोगों की How can it be a point of order? इस गवर्नमेंट को 5 मिनट भी सत्ता में रहने का हक नहीं है. 5 मिनट भी सत्ता में रहने का हक नहीं है. जो सरकार honorable LOP. है, आप रोज हारते हैं. Honorable LOP please. No please. Please allow me. No please allow me. Please allow me. No please. No please allow me. No please allow. No. Please allow me. के भी 2 किस्म, 500 के भी 2 No please.
allow me. भ्रष्टाचार के खिलाफ Please allow me. No. You listen. Very serious. प्रचार करते थे। No, I am only saying, even if there are two types of notes, it cannot be a point of order issue. You raise it in some other form. How can I allow a point of order on that? That is not an issue for point of order. No, please. What is the point of order? The point of order is Mr. Kapil Sibal has raised an issue. It's a serious issue and the rule is 258. Please look at 258. No, yes. So give him a chance to raise it. Yeah. 258. Yeah. Look at the notes. So- Why you look at the notes? No, The you, finance minister is here. there are other modes by which you can take it, not through point of order. But 258, you please look at No, 258. 258, so what? So that's the point. Any point can be raised on 258. No. Look at the note. No. No, sir. It should be, the point of order should be something regarding the list of business, No. affecting our list of business. Any point on 258. Sir, any point. No, Sir, that you is look it. at these No. Nothing to do with Sir, nothing to do with list of business. You look at 258. Sir, point of order. Sir, point of order. Sir, It can be a point Sir, of ये order when you question ये पैसा कहाँ से the निकाल list of के लाए business जरा ये बता दें। or the agenda of the house. पुराने पैसे लाए It हैं। is, you can, you raise it in some, Minister, you raise it in some other form. Yes, Minister. ये कोने से लाए हैं? किस तिजोरी के कोने से लाए हैं? ये बड़ा सवाल है, ये पैसे कहाँ से लाए हैं? Is it allowed? The currency note, from where have they got those currency notes? Yeah. Let them explain that. Yeah. This is not a point of order, sir. Sorry. It is not a point of order. You can bring it through some other form if you want. I don't mind. Yes. Yeah. शरद यादव जी, आपको क्या, शरद यादव जी क्या है? श्रीमान, शरद यादव जी, पॉइंट ऑफ ऑर्डर का इशू नहीं है. सुनिए सर, ये धरती, ये पूरे ग्लोब में कोई एक देश नहीं है कि एक रिजर्व बैंक नोट छापे, दो तरह के नोट नहीं छप सकते. ये कैसे छपे, सरकार को जवाब देना पड़ेगा. ये साइन मैं दे सकता हूँ आपके सामने, साइन करके दे सकता हूँ. इन दोनों का साइन ऐसा है तो आपको दूसरा नोटिस देना पड़ेगा. ये मामूली बात नहीं है. अलग नोटिस देना पड़ेगा. ये तबाह क्यों हुआ है? ये है भैया, अलग नोटिस देना पड़ेगा. एक बड़ा है, छोटा I है. cannot examine it कई now. तरह के features I am not an expert. You will have to give another notice. I cannot examine the notes now. I am not an expert. I am telling you. दो नोट. See, honorable members, no, please. Governor. No. Yes. गवर्नर छापता है. Sharad Yadav ji, Sharad Yadav, listen to me. You are showing me photocopy of notes. Please. I can show you here. Okay. Immediate. No, I agree. But yes, Derek O'Brien, I am not an expert for this to examine this. You give separate notice, we will consider. You give separate notice. I am not the expert to examine it. You give notice. Sir, 1 minute. 1 minute. Give me a chance. Sir, give me a chance. 2-5. You asked for the rule. I told you. Honorable member is- Whatever maybe I have given the ruling, you give another notice. You give separate notice. Sir, the notes have been tabled with your I office. am not allowing under Sir, 250. the notes have been tabled with your office. I am not allowing under The member has tabled the 258. notes with your office. What I is am this? not allowing under These are 258. different. I'll give this to the finance minister. Please ask for it. Sir, the notes have been tabled by the member. अब बोलिए ना. Yes, give it to finance minister. I have no objection. Sir, the notes have been tabled. There is no such provision that you can flash any paper at any time and say it's a point of order. There are rules under which you give notice. You start raising issues with regard to the currency of the country in this manner and such irresponsible statements are made. There is a misuse of 0 hour going on and it should not be permitted at all. So 258. 258. No, sir. No, why don't you give notice, separate notice? अरे रेणुका
you'll get a reply. You'll get a reply how frivolous your whole I case have not is. received. Oh, it is You have been raising, once you raised the issue of Nota, it was found out that it was during your government that it was issued. You have been raising frivolous issues every day in the 0 hour without giving notice, so that they can't be verified. Okay, in any case, you have to give another notice. You have to give another notice. I have to proceed. You have to give another notice. No, please. Well. Further allow. No. 267 notice. No, They are different in size, It is different not- in marking. it is not to be discussed on the point of order. That is all what I am saying. Therefore, the credibility of the currency in circulation has been challenged as like today. So you, Never before in the history you of the give country. it in any case. It is not to be discussed under point of order. You can give another. It cannot be taken up under point of order. You give, if you want, you give another notice. See, there are provisions in the rules. You can give other notices. You can give other notices. Now, please, 267, 3 PL Punia 267, not allowed. No, Digvijayji, I am only saying, Digvijayji, I am only saying that this cannot be discussed under point of order. You give separate notice. We will examine. The chairman will examine. The chairman will examine. The chairman, honorable chairman will examine. Honorable chairman will examine it. No. Only Honorable chairman will examine it. Sit down. If you are given notice, that will be examined. Sit down. Now, if you are given notice, honorable chairman will examine it. Now you sit down. I told you, if notice has already, see, under what rule you have given notice? 169. Okay, under 169 or 167, if you are given notice, there is a procedure. Honorable chairman will examine it and come back to the house. Come back to the house. PL Punia. ये इतना बड़ा घोटाला हुआ है, इतना बड़ा घोटाला है, इसके बारे में ये घोटाला हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया है, इसके ऊपर नरेश अग्रवाल, both have given 0 hour notice. I will go to 0 hour. Where is 0 hour notice? 0 hour Pramod Tiwari. एक नोट छप रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए, एक नोट छप रही है देश के कल्याण के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने देश के साथ कितना बड़ा विश्वासघात किया है, ये देश के साथ धोखा है, ये इस सदी का सबसे बड़ा घोटाला है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2 तरह की नोटें छपवा रही है, एक भारतीय जनता पार्टी के लिए और एक भारत के देश के लिए। ये सबसे बड़ी घोटालेबाज भ्रष्ट सरकार है। इस समय देश को ये लूट रहे हैं। आप सारे नियम कानून छोड़कर देश के बैंकों में, इसीलिए मैंने ये जो नोटिस दी इसलिए दी है कि बैंक के जो ग्रामीण अंचलों में है वहाँ कोई पैसा इसलिए नहीं है कि जो पैसा है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है। आज देश चल नहीं रहा है क्योंकि वहाँ के बैंकों में जब चेक लेकर कोई जाता है तो उससे यही कहा जाता है कि कैश नहीं है। कैश हो तो कैसे हो? इस देश में का बड़ा फ्रॉड हुआ है। आजादी के बाद आज तक इतना बड़ा फ्रॉड रोका नहीं हुआ है। मैंने इसीलिए नोटिस दी है कि आज अगर देश के बड़े Pramod Tiwari, are you saying your 0 hour? Yes, I'm saying.
आई एम सेइंग आज देश के बैंकों में पैसा नहीं है, क्योंकि देश के ग्रामीण अंचल के बैंकों में पैसा इसलिए नहीं है कि दो तरह की नोट छप रही है। House is adjourned for 15 minutes. एक नोट देश के लिए, Adjourned for 15 minutes. भारतीय जनता पार्टी के लिए।